हेलो एवरीवन, कैम जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर रमेश कुमार बंजारे। Then today I'm discussing for this were electronic configurations. Okay, so what is the electronic configuration? The electronic configuration are distribution of our electrons in our orbitals. Orbitals means different types of orbitals are present. Okay, so first one is explain the electrons, then orbitals 1 to 30 atoms. Okay, then okay, electronic configurations, then this application for the general of never Abahu principles and Pauli exclusion principles. Okay, Pauli exclusion principles and Abahu principles. Okay, both are follow and your Hund's law. Okay, Abahu's principles. Abahu principle are identification of the filling of electrons in orbitals. Pauli principles and Pauli principle is the Pauli exclusion principle is the filling of our electrons in one by one, and Hund's law, that is the filling of electrons in which positions, clockwise or anti-clockwise. Okay, then okay, so electronic configuration. So what is the electronic configurations? So electronic configurations is a distributions of electrons. Okay, electronic configuration is a distribution of electrons atoms in atomic orbitals. Okay, I mean to say इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बटना, किस में बटना, आपका ऑर्बिटल्स में बटना. देन डिटरमाइनिंग द केमिकल बिहेवियर्स, रिएक्टिविटी एंड पेरियोडिक टेबल्स पोजीशंस. ये इसमें क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है किस पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स प्रेजेंट है. मीन्स 4 टाइप्स के हमारे पास पोजीशंस प्रेजेंट होती है. फर्स्ट एस ऑर्बिटल्स, p orbitals, d orbitals and f orbitals. Okay, then that is arranged for this according to our atomic number. Okay, so 3 core principles or 3 core rules are present. Okay, first one is the Abahu principle. Then these Abahu principles are identifications to filling of our electrons in one by one, that is a series, sequence wise, 1s, 2s, 3s, 3p. Okay, these types of sequence are follow. So electron fill lower energy orbitals and first before the moving the higher energy, means first one lower energy to higher energy, means s orbitals to 1s to 2s, 2s to 2p. That is your series of increasing order of orbitals, s, p, d. Okay, then Pauli exclusions principles, and the orbital can the hold maximum 2 electrons with the opposite sides. Okay, 2 electrons are filling for the one single orbitals. Example for this were helium. Helium is a 2 electrons are present for the 1s2 electrons are present for this one s orbitals, and you are filling for the electrons. First one is your clockwise, second one is your anti-clockwise. That is your identification of your Pauli exclusion principle is your positions, means spin quantum numbers. Okay, then Hund's law. Hund's law is the identification of with the subcell. Okay, different types of the subcell are present. So example of your p orbitals. P orbitals are present for this your 3 subcell. P is your px, py and pz. Generally 3 orbitals are present for these forms. Okay, p orbital, that is the p orbitals, and px, py and pz. Okay, then understanding orbitals of energy levels. Okay, what is the energy level? Different types of energy level are present. First one, okay, principal quantum numbers and subset. Principal quantum number is 1. Okay, generally 4 types of quantum numbers are present. First one is the principal quantum number and denoted by the small m. Second one is your azimuthal quantum numbers, that is what mentioned for this one L, small l. And third one is your magnetic quantum number, that this one is mentioned for this small n, m. And spin quantum number, that is where mentioned for this one s. Okay, so that is what shape of our orbitals. And how to writing electronic configuration, how to write down for the electronic configuration. Example for this were hydrogen, example for this were chlorine molecules, atomic number of our 17, and these 17 electrons are distributed for the many orbitals. Okay, means example for this were 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. Overall 17 electrons are present. Then I am discussion for this were next. Okay, clearly discussion for this were atomic number, how to filling for this orbitals in electrons, किस टाइप से orbitals क्या होती है, orbitals में electrons fill होती है, वो मैं आपको बतलाऊंगा मैं आगे. Then first next one is your Abahu principle. Okay, Abahu principle and electronic configurations. Okay, what is Abahu principle and electronic configuration? So
इलेक्ट्रॉन फिल द लोअर एनर्जी एटॉमिक्स ऑर्बिटल फर्स्ट, मतलब बोलने के मतलब है, अबाव प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या होती है कि जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फील होंगे, उसके बाद हायर एनर्जी में वो ट्रांसफर होंगे. सो दैट इज योर ऑर्डर. ओके, ऑर्डर. सो फर्स्ट ऑर्डर इज योर 1s ऑर्बिटल्स, 2s orbitals, 2p. Okay, that is our sequence 1s, 2s, 2p. Then 3s, 3p, 4s and 3d. Okay, that is what change of in our position. So importance point you can see for this one importance points. Okay, 4s will the before the 3d because it is the slightly of the lowest energy. Okay, so that is why 4s. Okay, that is 3d is your high energy levels, high energy, and your 4s is your low energy. Okay, that is the parts of energy. Okay, energy levels are identification because 3d d orbitals is the higher occupied are present for this one higher energy levels, and 4 is your only for 4 is your lower energy levels comparison to 3d. So that is your electronic configuration of your carbon molecules. Okay, that is your sequence 1s2, 2s2 and 2p6. So carbon is your atomic number is your 6, and these 6 electrons are filling for these orbitals 1s2, 2s2 and 2p2. Okay, so that is what 6 electrons are distributed for the 3 orbitals, means 1s, 2s and 2p. That is the distributions of our electrons in orbitals. electrons का orbitals में क्या और वहाँ पे distributions हो रही है. तो नेक्स्ट देखें हम यहाँ पे जो अबाव प्रिंसिपल थे इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग किस टाइप्स की होगी, मैंने यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताई हुई है. जैसे फर्स्ट क्या देखें हम यहाँ पे 1s, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग फॉर दिस 1s, 2s, 3s, 2p, sorry 1s, 2s, 2p, 3s. Okay, so that is these types of electrons are transfer of your orbitals. Okay, that is what sequence one by one sequence are filling for this one orbitals in electrons. Then second one is one this slide are mentioned for this 1 to 15 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ओके, 1 से 15 तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. इसमें यहाँ पे नाम भी मेंशन किए गए. फर्स्ट हाइड्रोजन्स, सेकेंड इज योर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन्स, ऑक्सीजन्स, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड phosphorus. Okay, 15 electrons are present this one. Then next one is your 16. Okay, 16 to 13 electrons means sulfur 2 means 16 to your 30. Okay, 16 to 30 are present for the electronic configurations. Okay, and these types of electronic configuration I am discussing for this for next slides. Okay, so electronic configuration, that is your filling of your electrons. Okay, so which types of filling of electrons? So first example of your lithium, यहाँ पे लिथियम का एग्जाम्पल लिया गया जिसमें क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया आपकी 1s2 and 2s1. दैट इज योर कैपेसिटी. आई एम डिस्कशन फॉर दिस वन नेक्स्ट. हाउ टू कैपेसिटी, विच टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज आर योर ऑर्बिटल्स, किस टाइप्स के ऑर्बिटल्स में क्या होती है कैपेसिटीज होती है. एस में कितनी कैपेसिटीज होती है, पी में कितनी होगी, डी में कितनी होगी, आपको मैं बतलाऊंगा. उसमें ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होती है, ऑर्बिटल्स की संख्याएँ कितनी होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फिलिंग ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, then next one is your orbital subcell name. So 4 types of orbitals are present. So first orbital is your s orbitals. Okay, s orbitals, p orbitals, d orbitals and f orbitals. S, p, d, f. Okay, generally 4 types of orbitals are present. So s orbitals means one orbit. Okay, s means 1 orbitals, p means 3 orbitals, d means 5 orbitals and f means 7 orbitals. Okay, that is the number of orbitals. Okay, and these numbers orbitals are present for the different of our sub cells. Okay, so 1s orbitals are capacity. Okay, capacity of your electrons, filling of electrons. So s orbitals are only for 2 electrons capacity. p orbital is your 6 electrons capacity. 5 orbitals means d orbital is your 10 electrons capacity, and f is your 14 electrons capacity. That is your equal, I mean to say double. Okay, 1 means 2 electrons capacity, 3 means 6 electrons, 5 means your 10 electrons, and f means 7 means 14 electrons. That is your capacities of our filling of electron. So that is your shape structure. So s orbital shape is your one single orbital, that is your s. Then p orbitals,
Okay, 3 orbitals are present for the p. Okay, I mentioned the p orbitals. Okay, that is what 2p, I'm sorry, that is a p orbitals, not a 2p. I'm not a mention for this word any types of in a name. Okay, so p means px, py and pz. Okay, that is the p orbitals. And d orbitals, d orbitals means d is your 5 orbitals are present. So that is your d orbitals, 1 2 3 4, and last one is your 5. So that is the nomenclature of your d orbitals. So xy, yz and zx, and x is square, y is square, and last orbital's value is your z square. Okay, that is your nomenclature of your subcell. Then f orbitals are present for the 7 orbitals. So I am discussing for this your 1 to 30, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, 7 orbitals are present for this one f orbitals. So I am discussing for this one 1 to 30 electronic configuration. So you are not using for this f orbitals. Okay, so you are generally using for the s, p and d orbitals. Okay, so that is your name. Okay, name orbitals and your shape, I mean so your structures and your nomenclature of your subcells. Then first one is your electronic configurations. Okay, so electronic configurations are identification for the 1 to 30 electrons. Okay, 1 to 30 electrons, and these electronic configurations. So first one is your hydrogens. First one is your hydrogens molecules, and these hydrogen molecules atomic number is your 1, and 1 electrons are present. So 1 is 2, sorry, 1 is 1 because 1 is 1 because 1 electrons are present. Sorry, my mistake. Okay, so 1 is 1. Okay, means s orbitals is 1 electrons are present. Okay, then this one shape, structure of your shape in electronic configuration. So you have mentioned for this 1 is 1 means your principal quantum number. First I am discussing for this your quantum number, 4 types of in a quantum number. Okay, so 1, this one is your principal quantum number. So you are mentioned for this only for 1 electrons are present. So our feeling for the 1 electrons in your orbitals. हमने क्या क्या, एक ऑर्बिटल्स है हमारे पास, तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s में मैंने एक ही ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया यहाँ पे मेंशन किया. सेकेंडरी, दैट इज योर हीलियम. हीलियम इज योर 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज योर 1s2, मीन्स एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वहाँ पे प्रेजेंट्स होंगे. सो यहाँ पे मेंशन करते हैं 1s. 1s मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 1 and 2. Okay, that is your identification of your Pauli and Ohm's law, because okay, s orbitals in 2 electrons. So first one is your clockwise, second one is your anti-clockwise. That is your identification of your spin quantum number. So first one plus half and second one is your minus half. And plus half means that is your clockwise electrons are present, and minus half means anti-clockwise of an electrons. Okay, that is your series for the electrons. So both one, okay, clockwise and anti-clockwise both are present. So plus half and minus half, that is your value of spin quantum number. Okay, that is your value of spin quantum. Okay, that is a spin quantum number. That is the value of your spin quantum number. Okay, spin quantum numbers. Then second one I am discussing for this word second. Okay, second is your lithium. Lithium atomic number is your 3, and 3 electrons are present. So you have mentioned for the 1s2 and 2s1. Okay, that is the increasing for this word increasing of your orbitals, 1s to 2s. Okay, so you are feeling for this word orbitals in electrons, structure of 1s and 2s. This one 1s and this one 2s. So 1 electrons, 2 electrons, 3 electrons. Okay, so identification of your 3 electrons. Next one is your beryllium. Okay, next one is your beryllium. Is your atomic number is your 4. 4 electrons are present. So I mentioned for this 1s2 and 2s2. So I mentioned for this structure 1s and 2s.
Okay, I mentioned for this your structure for this 1s and 2s. So 1s is 1 electrons, 2 electrons, 3 electrons, 4 electrons. Okay, these types of structures are present. So next one is your beryllium to boron. Okay, next structure is your boron. So boron atomic number is your 5. So symbol of B and 5 electrons are present for this boron. So 1s2, 2s2 and 2p1. Okay, 1 electrons are present for this p orbitals. So value will be increased for this orbitals 1s, 2s and 2p. So 1s orbitals are present for the 2 electrons and 2s present for the 2 electrons, and p orbitals are present for the only for 1 electron. So 1s, 2s and that is your 2p. So that subcell orbitals name is your 2px, 2py and 2pz. Okay, that is the series of your boron. So electronic configuration of your boron is your 1s2, 2s2 and 2p1. So I am filling for these electrons 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 electrons are present for this boron molecules. And next one is your carbon. Okay, carbon series. So carbon molecules. So carbon atomic number is your 6. Okay, 6 electrons are present for this carbon. So electronic configuration is your 1s2, 2s2 and 2p2. Okay, all the 1s2, 2s2, 2p2 is where 2 electrons are present for this where all orbitals. Okay, all orbitals. So the sharing for this were orbitals in electrons. So that is the present for this 1s orbitals, 2s orbitals and 2p orbitals. Okay, so 1s, 2s and 2p. That nomenclature of 2p is your 2px, 2py and 2pz. Okay, so 2px, 2py, 2pz. So 1 electrons are filled. So 1, 2, 3 and 4, 5 and 6. That is your according to your Hund's law, Hund's and Pauli oppositions law. Okay, so that is your series 1 by 1 electrons are filling for our electrons. Okay, these types of orbitals are present, and this one. Okay, 2px, 2py and 2pz. You are filling for this your electrons in 1 by 1. Okay, I mean to say 1 and 2. That is your wrong. Okay, this one is your wrong according to your Pauli's and Hund's law. Okay, because Pauli's law identification of your 1 by 1 electrons are filled. First one is your unpaired of unpaired filling for the all electron orbitals, and then filling for this word paired form. So that is your unpaired. Okay, so that these types of structure is your wrong structures. Okay, that is your wrong structures. Okay, that is your correct. Okay, this one is your correct. Okay, that is your wrong. Okay, these types of structure is wrong because 1 by 1 electrons are filling, then 3 orbitals are present for these p orbitals and all the orbitals are unpaired. Then after the you are filling for the dual electrons and formation of your pairs forms. Okay, so next one carbons, and next orbitals is your nitrogens. Okay, nitrogens atomic number is your 7 electrons. Okay, so 7 electrons are present. So electronic configuration is your 1s2. Okay, so s2 and 2p3. Okay, that is your 3 orbitals are present for this p orbitals. Okay, px, py and pj. So electronic configuration is your, that is your 1s orbitals, 2s orbitals and 2p orbitals. Okay, 1s, 2s and 2px, 2py and 2pz. That is your 2p orbitals. Okay, so first one we are filling for this 1s and 2s electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, all the orbitals are present for the electrons, and these electrons is your unpaired form. Okay, that is your unpaired. All the orbitals electrons is your unpaired. Okay, that is unpaired form. Then next one, next examples is your oxygens. Okay, oxygens, O, symbol is your O. Then 8 electrons are present. Okay, 8 electrons are present. So electronic configuration is your 1s2, 2s2 and 2p4.
Okay, 4 electrons are present outer shell orbitals. Then I mentioned for these 4 orbitals of electrons, so 1s, 2s and 2p. Okay, 1s, 2s, 1s, 2s and 2px, 2py and 2pz. That is your 2p orbitals. Okay, so I am filling for this for electrons for the one by one. So 1 electrons, 2 electrons, 3 electrons, 4 electrons, 5, 6 and 7. Then next one 8 electrons. Okay, that is your 4th electrons, means p orbital. So these orbitals are formations. Okay, these orbitals are formation for this your pair form. Okay, and last 2 orbitals are unpaired. Okay, that is a formation of unpaired electrons. So one by one, okay, you can see for this one nitrogen atomic number 7. Okay, the p orbitals one by one electrons, lower energy level. So 2px, 2py, 2pz. That is your series. So first electrons filling for this your 2px, second electron filling for this your 2py, third electron filling for this your 2pz. Okay, means one by one electrons are filling for this your orbitals. मतलब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है वहाँ पे फिल हो रहा है. उसके बाद 3 ऑर्बिटल्स थे, तीनों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए. उसके बाद जो चौथी इलेक्ट्रॉन्स होगी वो क्या का फॉर्मेशन करेगी आप लोग की पेयर का, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पेयर इलेक्ट्रॉन्स या पेयर ऑर्बिटल्स का क्या करेगी वहाँ पे फॉर्मेशन करेगी. चौथा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा वहाँ पे पेयर का फॉर्मेशन करेगी. ओके, देन नेक्स्ट वन ऑक्सीजन. देन नेक्स्ट वन इज योर फ्लोरीन. 9 electrons are present for the fluorine. So 1s2, 2s2, 2p, 5. 5 and 2, 7. 7 plus 2 is your 9. Okay, so orbitals I mentioned for the shape of orbitals 1s, 2s and 2p. Okay, 1s, 2s, 2px, 2py and 2pz. Okay, that is your 2p orbitals. So 9 electrons are present. So I mentioned for this one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, 9 electrons are paired form. Then fluorine. Then next one is your neon. That is your neon. Okay, Ne. That is your symbol of neon. 10 electrons are present. So 1s2, 2s2 and 2p6. All the 6 or I will say all the p orbitals are fulfilled, means formation of your pair orbitals. Okay, that is the formation of your pair orbitals. That is a 1s, 2s and 2p. Okay, 2p means 1s, 2s, 2px, 2py and 2pz. Okay, so that is your 2p orbitals, 3 types of an orbital. Then all orbitals are pairs form. So 1 is 2 electrons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, 10 electrons are present for this your neon. Then next one, that is the electronic configuration of your neon. Then next one 11, atomic number of 11 is your sodium. Okay, 11 electrons are present. So 1s2, 2s2, 2p6. Then next new orbitals are 8, 3s1. Okay, one single new orbitals are present, so that is where 3s1. So one orbitals are increased. So 1s, 2s, 2p and 3s. Okay, 1s, 2s, 2px, 2py and 2pz, and that is your 3s. Okay, increasing for this your number of principal quantum number. Okay, principal quantum number are increased. So 11 electrons are present. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and last one is your 1 electrons are present for this your 3s orbit. Okay, front side is your constant, same to same. You are changed for the only for the last outermost orbitals. Okay, you are filling for the last outermost orbitals electrons. Okay, so that is your sodium. Next one is your magnesium. Okay, magnesium, example for this your magnesium, Mg. Okay, Mg, that is your symbol of your magnesium. Okay, so
12th electrons, that is the atomic number of your magnesium. So 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. Okay, and these 3s orbitals are fulfilled. So I mention the structure: 1s, 2s, 2p and 3s. 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, and last one is the 3s. So overall all orbitals are fulfilling our electrons. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, overall 12 electrons are filling for this orbitals. Then next one is your aluminium. Okay, aluminium, Al, atomic number is your 13. Okay, 13 atomic number. So 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2 and 3p1. Okay, next new orbitals are starting. So 3p1. So we have mentioned the orbitals: 1s, 2s, 2p and 3s, and that is where 3p. Okay, one orbitals are increased. So 1s, 2s and 2px, 2py, 2pz and 3s, and that this one is your 3p orbitals, and nomenclature is your 3px, 3py and 3pz. Okay, only for change for this your principal quantum number. Okay, principal quantum numbers are changed. So you are filling for this one electrons. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. Last electrons are present for this word 3p orbitals in aluminium. Then next one is your silicon. Silicon atomic number is your 14. 14 atomic number. So 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, 3p2, not a 6, I mentioned wrong. Okay, 3p2, 3p or 2. Okay, that is the electronic configuration of your silicon. So you are mentioned for this your 1s, 2s, 2p, 3s and 3p. 1s, 2s, 2p, 2px, 2py, 2pz and 3s, 3px, 3py and 3pz. Okay, that is your 3p structures. Okay, so these types of structures are present. Okay, one by one. So you are filling the electrons in orbitals. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So इसमें क्या करनी है आपको, वन बाई वन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करनी है, ऑर्बिटल्स में फिल करनी है कि किस टाइप्स के हमारे पास ऑर्बिटल्स और उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को किस टाइप से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फिल कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास 14 था सिलिकॉन का, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. ऑर्बिटल्स में सब सेल होते हैं, उस सब सेल में हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया है. ओके, देन नेक्स्ट क्या रहेगी आप लोग की, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. नेक्स्ट वन इज योर फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर इज योर 15. सो 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2 and 3p3. Okay, 3 electrons are present for this were last orbitals, for the p orbitals. So you are mentioned for this were orbital structures: 1s, 2s, 2p, 3s and last orbital is your 3p.
Okay, so I mentioned only for the name. 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, and 3s same, 3px, 3py, and 3pz. Okay, that is the nomenclature of our orbitals. So you are fill for the orbitals in one by one. Last one, 1 to 1s2 3s, दैट इज योर कॉन्स्टेंट, नॉट एनी चेंज. इसमें हमको कोई चेंज नहीं करनी, जैसा उसको वैसा वैसे ही फिलअप करनी है, कोई चेंजेस नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, 13 14 and 15. Okay, outermost orbitals electrons are present the 3 electrons. Okay, 3 electrons are present, so I mention the 3 electrons in your orbitals. Okay, then next one, phosphorus, then your sulfur. S means your 16 electrons. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p4. Okay, outermost orbitals are present for the 4 or electrons. Then that is where 4 electrons mean in a formation of in a pair form. Okay, that is a formation of pair. Okay, 1s, 2s, and that is the p orbitals, and 3s orbitals, and next one is the p orbitals. Okay, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, and 3s, 3px, 3py, and 3pz. Okay, so that is your series. So I am filling for this for electrons for the one by one. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then 16 electrons are formation of newer pairs form. Okay, 16 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है, पेयर का फॉर्मेशंस करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज योर कैल्शियम, Cl, सॉरी क्लोरीन. ओके, 16 इज योर क्लोरीन. क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एटॉमिक्स नंबर इज योर 17 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p5. Okay, all the orbitals number, okay, atomics number are increased, then orbitals value, orbitals electrons in increase. जैसे जैसे क्या हो रही है, ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, ऑर्बिटल्स में सॉरी एटॉमिक्स नंबर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है, जिसमें ऑर्बिटल्स का शेप भी क्या और वहाँ पे चेंजेस होती जा रही है. जैसे हम देखें यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स पे 1s ऑर्बिटल्स, 2s ऑर्बिटल्स, 3s, sorry 2p, 3s, and 3p. 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, and 3s, 3px, 3py, and 3pz. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 10. Then 11 12 13 14 15 16 and 17. Okay, 17 electrons are present for your chlorine molecules. Okay, so that is the electronic configuration. These types of filling for this orbitals in electrons. इस तरह से आपको क्या करने है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करनी है, भरना है भाई. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करनी, उसको इलेक्ट्रॉन्स को एक के बाद हमको क्या करनी है, भरनी है. देन नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे कौन सी, क्लोरीन के बाद कौन सी आती है आप लोग की, क्लोरीन के बाद आ जाती है भाई ऑर्गन. सिंबल क्या होती है आपकी, Ar. ओके, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्गन इज 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p6. Okay, all the orbitals are fulfilled, not any types of vacant orbitals are unpaired orbitals, or orbitals are fulfilled, I mean to say paired form. सभी के सभी orbitals क्या हो गया, वहाँ पे पेयर का फॉर्मेशंस कर लिए हैं. देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. ओके, सो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे 1s,
2s, 2p, 3s, 3p। नाम डाल देते हैं यहाँ पे 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz and 3s, 3px, 3py and 3pz. Okay, these types of structures of an R1 molecules and filling the electrons of an orbitals आपको इसको fill up करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. Okay, 18 electrons are filling for this orbital. So okay, next one 19, that is what create for this new orbitals, means 4s orbitals. Okay, next one is your next one is your k is your 19 electrons. Okay, potassium. Okay, then next one is 19. Okay, so 1 is 2, 2 is 2, 2p6, then 3 is 2, 3p6 and 4 is 1. Okay, that is when 19 electrons are present. Okay, so I mentioned the orbitals. 1 is, 2 is, 3 is, 3p and 4 is. 1 is, 2 is, 2px, 2py, 2pz. Then next is your 3 is, 3px, 3py, 3pz and this one is your 4s. Okay, 1 orbitals are new created for the 4s orbitals. Okay, so filling the electrons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. 4s orbital present for the only what single 1 electrons. Okay, then next one means 20 calcium, 20 electrons, atomic number is your 20. Okay, so 1 is 2, 2 is 2, 2p6, 3 is 2, 3p6 and 4 is 2. Overall all orbitals are filling for this electrons in 1 by 1 series. So filling the orbitals in electrons. 1 is ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमको भरनी है, किस टाइप्स की भरनी है आपको, ये जैसे मैंने आपको बतला रहा है वैसे ही आपको भरनी है, किसी टाइप्स के आपको चेंजेस नहीं करनी है, जैसा रहेगा वैसा का वैसे ही आपको क्या करनी है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरनी है। ओके, कोई चेंजेस नहीं करनी है, बस हाँ आपको जो है पीछे के ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं वहाँ पे वही इंक्रीज़ हो रहा है, उसी में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रही है, सामने का आपका का पूरा सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके, पूरी की पूरी क्या है हमारे पास ये सेम टू सेम है, इसमें किसी टाइप्स की हमको क्या नहीं करनी है, चेंजेस नहीं करनी है। सो नॉमेनक्लेचर 1 is 2, 2 is 2px, 2py, 2pz. Okay, 2pz and 3 is 3px, 3py, 3pz and 4s. ओके, और इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए इसमें पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, that is your 20 atomics number 1 to 20. Okay, that is your series you can see for this one 1 to 30 means hydrogens to calcium. Okay, CaH2Ca. So that is where electronic configurations. Okay, that is where electronic
configurations of 1 to 20 atoms. Okay, next one is your 21 to 30. Okay, next one is your 21 to 30. So first electrons for the 21 is your scadiums. SC scadiums. Atomic number is your 21. Okay, and this one including of your including of your d orbitals. Okay, including of your d orbitals. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1. Okay, so you are change for this for electronic configuration. So I mentioned for this where these types of changes you can see for this one last outermost orbitals. Okay, that is the outermost. Okay, outermost orbitals, that is the outermost orbitals. Okay, so that is what changing for this for position. Okay, actual sequence is your 3d1 and 4s2. Okay, that is your actual sequence, but change of your energy. Okay, change of your energy. So you are mentioned for this your these types of theory. Okay, 4s2, 3d1 and 3d1 and 4s2 both are correct. Okay, both are correct. Both are correct. Okay, both are correct. So according to you, okay, according to you, which types of electronic configurations I have write down? Okay, so next I am filling the orbitals in electrons. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 1 2 3 4 5. Okay, 5 orbitals. So 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, then 3s, 3px, 3py, 3pz and 4s. Okay, xy, yz, zx, x square, y square and z square. Okay, that is the nomenclature of your orbitals. So how to filling of electrons? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, then next one 21 last orbitals. Okay, means d orbitals, that is with 3d. Okay, d orbitals. So this one d orbitals, so I mentioned for this one. Okay, so that is your d orbitals. Okay, d orbitals, starting for this one d orbitals, and these d orbitals 3 series. Okay, so that is what 3d, 4d and 5d. 4 types of in a series are present: 3d, 4d and 5d. Okay, so this one 21 to 30, that is what 3d series. Okay, that is what 3d series. So starting for this is cadmiums. Then next one, okay, next one is your titanium. Okay, Ti, that is your symbol of your Ti. Ti is your 22 electrons. Atomic number is your 22. Okay, 22 is your atomic number. Then okay,
So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1. Sorry, 2. Sorry, that is my mistake. 22. Okay, that is the atomic number of 22. So 3d2. Okay, d orbitals are present for this word. 2 electrons in d orbitals. Then 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 3s, 3px, 3py and 3pz, 4s, xy, yz, zx, x square, y square and z square. Okay, so that is your 3D series, and this one is your 3p and this one is a 2p. Okay, so filling for the electrons in 22. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. That is the electronic configuration of our titanium Ti. Okay, that is the electronic configuration of our Ti, titanium. Your vanadium. Okay, 23, atomic number 23. So atomic number 23 is a vanadium. Okay, V, symbol is where V, and 23 atomic number. So 1s2, 2s2, 2p6 and your 3s2, 3p6 and 4s2 and your 3d3. Okay, last outermost orbitals means 3d. These 3d are increasing for this your numbers of electrons, d orbitals, and these orbitals, d orbitals are capacities of your 10 इलेक्ट्रॉन. ये जो इसकी वैल्यू है डी ऑर्बिटल्स की वो 10 होती है इलेक्ट्रॉन्स. 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और पर ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की. सो ओवरऑल 5 to 10 मतलब उसके 2 गुना हो जाती है, 5 का 10 हो जाती है. ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है 1 by 1 सीरीज के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको टाइटेनियम बताया. तो इसमें क्या होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन कंटिन्यूस 1 by 1 इज वेयर ओनली फॉर डी ऑर्बिटल्स. देन फ्रंट साइड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3p, 4s दैट इज योर कांस्टेंट, नॉट एनी चेंज. इस सभी में 1s से लेकर 4s तक इसमें किसी में भी चेंज नहीं होती. सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में होती है आपकी डी ऑर्बिटल्स में ही चेंज होती है. जैसे कि हम देखें यहाँ पे एस ऑर्बिटल्स 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s and 3d. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so mention the your name. 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz and 3s. Okay, 3s. Then okay, 3px, 3py, 3pz. Okay, then 4s and xy, yz, zx, x square, y square and last one is your z square. Okay, that is the nomenclature of your d orbitals. So filling of electrons in orbitals. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23. Last d orbitals are present for the 3 electrons. Okay, only for the change of d orbitals, not of front side. सिर्फ और सिर्फ d orbitals में ही चेंज हो रही है. इससे पहले क्या थी आप लोग की 3d2 था. पहले क्या था, इससे पहले आप लोग की 3d2 थी यहाँ पास, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गई 3d3. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग फॉर द ओनली फॉर डी ऑर्बिटल्स. सिर्फ डी ऑर्बिटल्स में क्या हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या वहाँ पे चेंज हो रही है, बाकी किसी में चेंज नहीं हो रहा है भाई. ठीक है, बाकी सब फ्रंट का जो है सब कांस्टेंट है, किसी में कोई चेंजेस नहीं हो रही है. फिर आ जाते हैं हम यहाँ वेरेडियम के बाद क्रोमियम. एटॉमिक्स नंबर 24 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2. Last one is your 3d4. Okay, only for changing the number of d orbitals. d orbitals में क्या हो रही है, नंबर बढ़ती जा रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, जैसे जैसे हम क्या होते जाते हैं पीरियोडिक टेबल्स में लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड चलते जाते हैं, मीन्स डी ऑर्बिटल्स में, तो क्या होती है इसमें नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है. सॉरी, एटॉमिक्स नंबर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम इसमें ऑर्बिटल्स की वैल्यू पुट करने के लिए. इलेक्ट्रॉन्स 1s, 2s, okay, so 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s and 3d. Okay, so 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz and 3s. Same condition apply for the p orbitals. 3px, okay, 3px, 3py and 3pz and 4s, xy, yz, zx, x square, y square and last one is your z square. Okay, last orbitals value is z square. So you are filling for the electron. अब इसमें हमको क्या करनी है, ऑर्बिटल्स तो हमने यहाँ पे बना ली, अब हमको क्या करनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करनी है, फिल अप करनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, then 19, 20, 21, 22, 23 and 24. All orbitals are unpaired. So that is the chromium. फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी रहेगी आप लोगों की क्रोमियम के बाद, मैग्नीज, Mn. एटॉमिक्स नंबर 25. ओके, इलेक्ट्रॉन्स गुड. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and next one 3d5. Okay, last orbitals are full filaments. So not a full fill, that is unpaired full fill. Unpaired electrons, 5 electrons आ गए उसमें. So फिर बनाते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स. 1s का हो गया, फिर 2s का हो गया, फिर आ जाता है हमारे पास 2p का हो गया, 3s का हो गया, फिर आ जाता है हमारे पास 3p, फिर 4s, फिर आ जाता है हमारे पास 3d. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mention the name. 1s, 2s, 2px, 2py and 2pz. फिर 3s, 3px, 3py, 3pz and 4s. Then that is the d orbitals. Which d?
3D. Okay, so x y, y z, z x, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और लास्ट जो ऑर्बिटल्स वो हो जाएगा z का स्क्वायर. ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स में फिलअप करो भाई. 25 इलेक्ट्रॉन्स हमको डालने इसमें कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख लिया है. ऑर्बिटल्स भी हमने बना दिया. ऑर्बिटल्स का सेप, अब इसमें का कारण इलेक्ट्रॉन्स बने हैं. 1 2 काउंटिंग करते जाएगा आप लोग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Okay, so next one is your magnesium. So next one is your iron molecules. Okay, iron, that is your iron, Fe, that is the atomic number is your 26 electrons. Okay, then next time discussion for this previous, for this 24 chromium. Okay, so chromium, that is the exceptional case. Chromium is your exceptional. Okay, 24, that is the exceptional case for these one structures. Okay, so this one is your transfer of your 1 electrons. Okay, shifting of your 1 electrons in 4s2 3d 5. Okay, so that is a converting for these 4s1 and 3d 5 and 1 electrons. Okay, this one 4s2 electrons are present. This side are 2 electrons are present. Okay, 2 electrons are present for the 4s, and these 4s you are shifting for this our 1 electrons. Okay, transfer of for the your 1 electrons and formation of your these one structures. Okay, means 4s1 3d 5. So these structures are converting. So that is the formation of your, okay, that is the formation of these types of structures. First one is your 4s 1 electrons and d orbitals, 3d orbitals are represent for this one 1 2 3 4. एक्चुअल स्ट्रक्चर फॉर दिस 4 इलेक्ट्रॉन. एक्चुअल में क्या होती है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होनी चाहिए, बट ये क्या होती है, क्रोमियम के एक्सेप्शनल केस होती है, अपवाद होती है, जिसके कारण क्या होती है 4s से 1 इलेक्ट्रॉन्स किस में चली जाती है, आपकी 3d ऑर्बिटल्स में चली जाती है, जिसके कारण से यहाँ पे होनी चाहिए थी 3d 4, लेकिन हो जाती है वो कौन सी 3d 5 हो जाती है. तो इस टाइप्स के हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं. ये होती है आप लोग की एक्सेप्शनल केसेस. क्रोमियम क्या होती है आपकी एक्सेप्शनल केस होती है भैया, याद रखिएगा ना. आपको क्या लिखनी है, ये लिखनी है, ये वाले लिखनी है. दैट इज योर करेक्ट एक्सेप्शनल केस, बट दैट योर नॉर्मल कंडीशन, बट दिस योर एक्सेप्शनल केस. सो यू हैव राइट डाउन फॉर दिस वन 4s1 and 3d 5. ओके, so next one, iron molecules. Okay, iron molecules, atomic number is 26. So 1s2 2s2 2p6 and 3s2 3p6 and 4s2 and 3d6. Okay, last outermost orbitals are present for these 6 electrons. Okay, 6 electrons are present. So that is an exceptional case in your chromium. So I am mentioned for this for structures. First one is your s orbitals, 2s orbitals, 2p orbitals, 3s orbitals, 3p orbitals, 4s orbitals, and last one is your 3d orbitals. Okay, so I mentioned the name 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, and 3s, 3px, 3py, 3pz, and 4s, xy, yz, and zx, x square, y square, last one is your z square. Okay, that is the electronic configurations of iron molecules, and this one is a very important for the entrance exam. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25 and 26. That is your formation of your pair electrons, 6 orbitals. Okay, last one is your 6 electrons are present for this one iron molecule. So that is what converting for this pair orbital. So this one, okay, that is what converting for this your pair
pair form. Okay, and that is the formation of your pair. Then next one is your cobalt, CO. Okay, atomic number is your 27 electrons. Same. Okay, same to same, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d7. Okay, 27 atomic numbers. Okay, सो नेक्स्ट हम फिर सेमली डिस्कशन फिर से मैं आपको बतला रहा हूँ यहाँ पे मैं कि 1 से लेकर 1s से लेकर 4s तक कोई भी चेंजेस नहीं हो रही भाई. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस करनी है, डी ऑर्बिटल्स में 21 से लेकर 30 के बीच में क्या करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करनी है यहाँ पे. ठीक है, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसका, सेम रहेगा स्ट्रक्चर जैसा हम पहले बनाते हुए आ रहे हैं. 1s 2s 2p, ओके, 3s 3p 4s. देन लास्ट आ जाती है आप लोग की डी ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स. ओके, सो कोबाल्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एवर. ओके, मेंशन द नेम 1s 2s 2px 2py 2pz, 3s 3px 3py 3pz and 4s xy yz zx x square y square, last one is your z square. Okay, then we are filling the electrons. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 and 27. 2 पेयर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशंस. दो हमारे पास क्या बन गए, पेयर ऑर्बिटल बन गए किसमें, कोबाल्ट में. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो रहेगी आप लोग की निकल. ओके, Ni जिसका एटॉमिक नंबर होती है आप लोग की 28 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ओके, सो सेम, नॉट अ चेंजिंग फॉर एनीवन, ओनली फॉर द चेंज फॉर दिस वर्ड डी ऑर्बिटल. सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल्स में चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं करनी है आपको, सेम टू सेम लिखनी है, जैसा था आपको वैसा ही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करनी है ना. ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and last 3d8. ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट फॉर द 3d8 फॉर द निकिल. फिर वही करनी है हमको, स्ट्रक्चर बनानी इसका. 1s 2s 2p 3s 3p 4s and 3d. ओके, 1s नाम लिख देते हैं भाई इसमें, 1s2 2s2 2px 2py 2pz and 3s 3px 3py 3pz 4s xy yz zx, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाती है आप लोग की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो निकिल का हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Okay, so that is the electronic configuration of your nickel. Then next one is your copper 29. Okay, ये भी आपका सेम क्रोमियम के जैसा है भाई, एक्सेप्शनल केस होती है ये. ठीक है, ये क्या होता है आप लोग की एक्सेप्शनल केस होती है. वो कैसा एक्सेप्शनल केस होती है बताते हैं आपको हम. 1s2 2s2 2p6, सामने का तो कुछ चेंज नहीं होगी, नॉट अ चेंजेस फॉर दिस फ्रंट साइड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. एंड 3p6 4s2 and 3d9. Okay, this series will be changed. Okay, that is your normal form, but that is what change for this your 4s1 and 3d10.
actual conditions, this one is your apply because that is your exceptional case. आपको ये चीज़ लिखनी है, ये वाली, ठीक है, ये भी सही है, बट ये एक्सेप्शनल केस में आते हैं ना बेटा, तो इसमें क्या की जाती है 4s1 और 3d10 लिखी जाती है. फिर वही चीज़ होगी, यहाँ से क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, जिसके कारण से 4s में क्या होगी 1 इलेक्ट्रॉन और d में कितनी हो जाती है 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है. ठीक है, तो हम यही चीज़ फॉर्म अलाउ करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगी आप लोग की 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p. ओके, आई एम ड्रॉ द बोथ स्ट्रक्चर. मैं आपको दोनों बना रहा हूँ, मैं किस टाइप्स की बनती है वो 1s 2s 2px 2py 2pz and 3s 3px 3py 3pz 4s xy yz zx x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर. ठीक है, ये मैं आपको नॉर्मल, फर्स्ट में नॉर्मल कंडीशन बतलाऊंगा किस टाइप्स की होती है. फर्स्ट वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सामने हमको कोई चेंज नहीं करनी, लास्ट ऑर्बिटल्स हमको चेंज करनी है, तो सामने को जैसा उसको वैसा को वैसे ही रखिए आप, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी इसमें आपको. देन 4s, ओके, दैट इज व्हाट चेंजिंग फॉर दिस पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. That is your actual conditions, but this one are changing. Okay, that is what change for this were positions, both positions are changed. Okay, both positions are changed in converting of now 4s, and this one is your, okay, I am filling the electrons. So 1 electron, these are present for only for 1 electrons and shifting for this were 2 electrons. Okay, sorry, shifting of 1 electrons, 2 electrons are present for the 4s, but 1 electron are shifting for the d orbital. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these types of a structure are so, this structure, okay, these types of a structure are so, that is an exceptional case. अपवाद है भाई, ये कौन कौन सी, क्रोमियम और आपकी कॉपर, ये दोनों क्या होती है अपवाद होती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं इसमें हेर बदल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के एक से दूसरे में हम इसको क्या करने पड़ते हैं, हमको शिफ्ट करनी पड़ती है. दैट इज एक्सेप्शनल केस. ओके, देन नेक्स्ट वन 30, दैट इज योर जीइंग, लास्ट वन, दैट इज योर लास्ट जीइंग. एटॉमिक नंबर इज योर 30, 30 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10. ओके, दिस टाइप्स की स्ट्रक्चर हमको बनानी होती है 3d10. अब इसमें क्या होगी, पूरी की पूरी फुलफिल होगी ना, किसी टाइप्स की चेंजेस नहीं करनी हमको, जैसा है वैसा वैसा बना दीजिएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी भैया, जैसा है उसको वैसा का वैसा ही बनाओ. सिर्फ ऑर्बिटल्स को ही हमको क्या करनी है, इसमें चेंज करनी है. देन 4s and 3d 1 2 3 4 5. okay, so 1s 2s 2px 2py 2pz and 3s 3px 3py 3pz 4s xy yz zx x का स्क्वायर y का स्क्वायर लास्ट z का स्क्वायर. अब इसमें पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स 1 2 3d, पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फुलफिल होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Okay, that is overall complete for this were electronic configurations. Okay, and that is our electronic configuration of 1 to 30 atomic number. Okay, so that is your outermost orbital cell electrons. Okay, so how to converting for this outermost cell electrons. So I am mentioned for this outermost orbitals electrons. So that is the overall electronic configuration. Okay, so that is what outermost electrons means, outermost. Okay, so I mention the outermost, outermost
most electronic configurations of 3D orbitals. Okay, that is the outermost electronic configuration of 3D orbitals. That is a short form. Okay, that is what short form of our electronic configurations for 3D. Okay, so first one is your scandium. Outermost means that is your 3D one, 4s2. Second one is your titanium, that is your 3d2, 4s2. Next one is your vanadium, 3d3, 4s2. Okay, then next one is your chromium. Okay, that is your exceptional case, so 3d5, 4s1 and chromium. Then next one is your magnesium, and that is your 3d5, 4s2. Then next one is your iron, Fe. Then 3d6, 4s2. Then next one iron, then next cobalt. Okay, 3d7, then 4s2. Then next one is your nickel, 3d8, 4s2. Then next one is your copper. Okay, copper is your exceptional case, so that is your 3d10 and 4s1. And next one is your zinc, so that is your 3d10 and 4s2. That is your outermost overall electronic configuration for the outermost cell. Means बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स, बाहर कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है ना, उसी को बोले जाते हैं हम लोग कि बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन. जैसे क्रोमियम को हो गया, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होती है, तो होना चाहिए था इसको 3d4 एंड 4s2 ये होना चाहिए था. और ये कॉपर को होना चाहिए था आप लोग का 3d9 और 4s2 होना चाहिए था. बट हो क्या गया आप लोग का, ये चेंजेस हुई इसमें आप लोग की, ये दोनों में. ठीक है, सो दैट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स. लास्ट के दो कक्षक को काउंट की जाती है, उसको बोली जाती है आप लोग की आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दैट इज दिस वन कंप्लीट फॉर दिस यूर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ 1 to 30 atomic number. Okay, thank you all of you.